Welcome back. In previous lectures, we have seen the HTML tags and what is HTMLs, and the BI tag, pre tag. Okay. Now, today we have starts the HTML forms. Okay. The HTML forms क्या है? The HTML forms are required when you want to collect the some data from the visitors. Okay. A form will take input from the site visitor and then will post to a backend applications. There are the various form elements available like text field, text area, drop down box, menu, radio buttons, checkbox, etc. The HTML form tag is used to create a HTML form. Okay, with the help of form tag you can create a HTML forms, and it has the following syntax. The forms, the what is actions, script URL. Okay, यानी actions means suppose हमें फॉर्म सबमिट करने के बाद हमें कहाँ पे ले जाना है, कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, then we can put it out in the action tag. Okay, action attributes, and then after method. Okay, we can use a method in the get or post method. Okay, तो get and post method क्या है वो आगे देखेंगे. Then form elements like input box, input text box, text area, etc. and the closing of form tag. Okay, now what is the difference between get method and post method? Okay, तो get हम कहाँ पे यूज करेंगे? The request data from a specified resources. Suppose हमें कोई डेटा है, वो डेटा backend से एक्सेस करवाना है और डिस्प्ले करवाना है, then we can use the get method. Okay, then post, submit data to be processed to a specified resources. Okay, submit data to be processed by the specified resources. Now history क्या है? The parameters remains in the browser history because they are part of the URL. Okay, यहाँ पे ब्राउजर में सेव रहेगी इसकी हिस्ट्री. Then parameters are not saved in the browser history. Then bookmark. Okay, हिस्ट्री सेव होगी यानी हम बुकमार्क उसको कर पाएंगे. In post method we can not bookmark. Parameters can send, but the parameters is limited to what we can stop into the request line. Okay, जो request URL में हम जितना भी भेज सकते हैं उतना हम भेज सकते हैं. Safest to use less than 2k parameters. The sum server handle up to 64k. Okay, यहाँ पे can send parameter including uploading files to the server. Okay, यहाँ पे हम जो parameters वो data number of pass कर सकते हैं post method में, but in get method we can a smaller amount data. Hack में तो hack easy to hack, in post method more difficult to hack. Restriction क्या है? Yes, only ASCII character is allowed in a get method. In post method we can't, no restrictions. No restrictions, and the binary data is allowed. Now for the security sides, get is less secure compared to the post because the data sent is the part of the URL. Okay, यहाँ पे जो हम डेटा पास करेंगे वो URL में डिस्प्ले होगा. That's why this is the less secure. So it is saved in the browser history and server logs in the plain text. Post is a little safer than the get because the parameters are not stored in the browser history or web server logs. Now restrictions from the data length. Okay, yes, in get method, yes, since from the data is in URL and the URL length is restricted. Okay, a safe URL length limit is often a 2048 characters, but varies by browser and web server. Okay, in post method there are no restrictions for the data length. Usability. Get method should not be used when the sending password or other sensitive informations. Okay, हम कहाँ पे use कर सकते हैं get method और post method कहाँ पे use कर सकते हैं? The post method is used to when sending a password or other sensitive informations. Okay, visibility. In get method is visible to everyone, will be displayed in the browser's address bar and has limits on the amount of information to send. Okay, यहाँ पे limitation आ जाएगी. In post method the variables are not displaying the URL. And cache memory can be cached and not be cached. Okay, so this is the difference between what is get method and the post method. Now form attributes, हम देख रहे थे अभी form attributes में कौन से attributes आते हैं. Okay, तो form is also tag, तो उसमें हमने method देखी, get and post. Okay, now first one,
उसमें मेनली 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज एक्शंस, द सेकंड वन इज अ मेथड, द थर्ड वन इज अ टारगेट एंड द फोर्थ वन इज अ एन्क्रिप्शन टाइप. In actions, the backend scripts ready to process your past data. Suppose यहाँ पे एक्शन में हम क्या लिख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे हम फॉर्म सबमिट करने के बाद एक्शन में हम वो लिखेंगे जहाँ पे हमें पेज रीडायरेक्ट करना है. ओके, कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, ये कहाँ पे ले जाना है, तो वो सारी डिटेल्स हम we will mention in action attributes. Okay, now method is to be used to upload data. The most frequently used are get and post methods. Okay, हम दोनों ही ज्यादातर यूज करेंगे get and post. Target, specify the target window or frame where the result of the script will be displayed. It takes the value like underscore blank, underscore self, underscore parent, etc. Now, encryption type. You can use the encryption type attribute to specify how the browser encodes the data before it sends to the server. The possible value क्या हो सकती है? First one, application slash x www form URL encoded. Okay, this is the standard method to most form used in the simple scenario. Okay, suppose हमें फाइल्स ले जानी है, वर्ड फाइल ले जानी है, तो देन आफ्टर हम एनक्रिप्शन टाइम क्या यूज करेंगे? मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा. ओके, सिंपल फॉर्म के लिए हम ऊपर वाले यूज करेंगे. एंड सपोज हमारे पास इमेज है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, वो ले जाना है, देन वी कैन यूज अ मल्टीपार्ट. ओके, now HTML form controls कितने हैं? First one is a text control, the second one is a checkbox controls, third one is a radio box control, fourth one is a select box control, and the next one is a file select, next one is hidden controls, the clickable buttons, and the last one is a submit and the reset buttons. Okay, हम एक एक करके देखेंगे कि हाँ फर्स्ट क्या है, हम कैसे प्रोसेस करेंगे. Okay, now first one is a text input controls. There are the three main types of the input controls. Text input controls, first one is a single line, second one is a multi-line, and the third one is a password. Okay, तो single line हम कहाँ पे यूज करेंगे? This control is used to the items that require only one line of user input, such as search boxes or names. They are created by using HTML input tag. Okay, now password input controls. This is also a single line text input, but it makes mask the character as soon as the user enter it. Okay, यहाँ पे mask हो जाएगा, जो भी हम value enter करेंगे वो password के फॉर्मेट में आ जाएगा. They are also created by using the HTML input tag. And the third one is a multi-line text input control. This is the used when the user required to give details that may be longer than a single sentence. Okay, like address है, कोई डिस्क्रिप्शन है, वो हमें राइट करना है, तो वहां पे हम मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल यूज करेंगे. द मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल्स आर क्रिएटेड यूजिंग द टेक्स्ट एरिया टैग. ओके, सिंगल लाइन के लिए हम इनपुट टैग यूज करेंगे, पासवर्ड के लिए भी हम इनपुट टैग यूज करेंगे, बट यहाँ पे हम इनपुट में टाइप में हम पासवर्ड लिखेंगे. ओके, और यहाँ पे मल्टी लाइन में हम क्या कौन सा टैग यूज करेंगे? टेक्स्ट एरिया. ओके, तो ये रहा टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल का सिंगल का एग्जांपल. द फर्स्ट वन इज अ टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स. ओके, फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम. तो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, यानी ये सिंगल लाइन के लिए सिंगल लाइन इनपुट कंट्रोल्स. इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, द नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, एंड इनपुट टाइप टेक्स्ट, द नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम. ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल लाइन इनपुट कंट्रोल्स. ओके, तो इसका आउटपुट ये आएगा, फर्स्ट नेम, देन जो भी टेक्स्ट बॉक्स हमने लिए सिंगल लाइन वो, एंड द लास्ट नेम. ओके, तो उसके एट्रीब्यूट्स कौन से आएंगे? फर्स्ट वन सिंगल लाइन के लिए, तो टाइप, नेम, वैल्यू, साइज एंड द मैक्सिमम लेंथ. तो टाइप में हम क्या लिखेंगे? टेक्स्ट लिखेंगे. ओके, फॉर द इनपुट कंट्रोल. ओके, indicates the type of input controls, and the for text input control it will be set to a text name. हम नेम जो यूजर के साइड से हमें रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ सर्वर के साइड से, तो हम यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे. वैल्यू, सपोज हमें कोई इनिशियल वैल्यू पुट अप करनी है, देन वी कैन यूज अ वैल्यू एट्रीब्यूट. दिस कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड इनिशियल वैल्यू ऑफ इनसाइड द कंट्रोल. साइज allows to specify the width of the text input controls in terms of the character. Suppose हमें allow size इतनी चाहिए, okay, वो mention करनी है, then we can use a size. A maximum length allows to specify the maximum number of characters a user can enter into the text box. Okay, there are the attributes of the single line input control. Okay, now password input control. तो password input के लिए यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे? Input type is equal to password.
ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है. वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ टेक्स्ट. ओके, वी कैन यूज अ पासवर्ड. तो ओके, इसका आउटपुट ये आएगा. उसके सेम एट्रीब्यूट आएंगे बट टाइप में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे. ओके, वहां पे सिंगल लाइन में टेक्स्ट लिखते थे, यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे. ओके, बाकी जो सेम है एट्रीब्यूट सेम ही है. नाउ मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स. In multi-line text input controls, we can create using the text area tag. Okay, text area tag. तो उसमें कितने एट्रीब्यूट्स आएंगे, फर्स्ट वन इज रोज, देन कॉलम्स और उसके नेम. ओके, with the help of text area tag we can create a multi-line text input. Okay, this is the output. Okay, name, rows and columns. नेम में क्या आएगा, जो नेम हमने यूज टू गिव द नेम टू द कंट्रोल विच इज सेट टू द सर्वर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड गेट द वैल्यू. रोज क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेट द नंबर ऑफ रोज ऑफ टेक्स्ट एरिया बॉक्स. कॉलम्स इंडिकेट द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द टेक्स्ट एरिया बॉक्स. नाउ सेकंड कंट्रोल, चेकबॉक्स कंट्रोल. ओके, तो चेकबॉक्स कंट्रोल में यहाँ पे वी हैव अ वन चेंज. इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स एंड यहाँ पे हम वैल्यू को ऑन रखेंगे, यानी जो चेकबॉक्स होगा वो क्लिक करके आएगा. ऑफ रखेंगे तो क्लिकेबल नहीं आएगा. ओके, तो ये रहा उसका आउटपुट. ओके, नाउ टाइप में हम चेकबॉक्स लिखेंगे, नेम में नेम. ओके, क्यों लिख रहे हैं, यूज टू गिव द नेम टू द कंट्रोल विच इज सेट टू द सर्वर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड गेट द वैल्यू द वैल्यू दैट वी विल used if the checkbox is selected. Okay, select करने के लिए. Now check set to check if you want to select it by default. Okay, now radio button control. In radio button controls we can use type is equal to radio. Okay, type is equal to radio. Then so this is the radio button control. तो इसका आउटपुट ये आएगा. उसमें भी सेम एट्रीब्यूट टाइप, नेम, वैल्यू एंड चेक्ड. यहाँ पे टाइप में हम क्या मेंशन करेंगे, रेडियो. नाउ सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल. और सिलेक्ट बॉक्स यानी कि हमारा ड्रॉप डाउन. ओके, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कि हम यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल कैसे यूज करेंगे. तो सिलेक्ट बॉक्स कंट्रोल के लिए आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट वन इज वी कैन यूज विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट. ओके, और हर एक ऑप्शन के लिए हमें ऑप्शन टैग यूज करना है. हर एक ऑप्शन के लिए, हर एक वैल्यू के लिए ऑप्शन देन वैल्यू मैच सिलेक्टेड. ये सिलेक्टेड है यानी वो फर्स्ट जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करके आएगी. ओके, मैच, उसके बाद फिजिक्स. ओके, और यहाँ पे जो सिलेक्ट है उसका नेम क्या है, ड्रॉप डाउन है. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. सिलेक्ट नेम इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू मैच सिलेक्टेड, मैच ऑप्शंस. ओके, ऑप्शन वैल्यू फिजिक्स देन फिजिक्स. ओके, तो ये रहा मैथ्स ऑलरेडी सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट वैल्यू है ही. ओके, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स कौन से आएंगे, तीन एट्रीब्यूट्स आएंगे. फर्स्ट वन इज अ नेम, द सेकंड वन इज अ साइज एंड द थर्ड वन इज अ मल्टीपल. ओके, इफ सेट्स द मल्टीपल देन अलाउज टू यूजर सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स फ्रॉम द मेनू. ओके, सपोज हम मल्टीपल वैल्यूज सिलेक्ट करवानी है, देन वी कैन यूज अ मल्टीपल एट्रीब्यूट. Attribute of options. Okay, first one is a value, the second one is a selected and the third one is a label. Okay, value, the value that will be used if an option in the selected box is selected. Okay, selected. तो वो क्या डिस्क्रिप्शन में आएगा, स्पेसिफाई दैट द ऑप्शन शुड बी इनिशियली सिलेक्टेड वैल्यू व्हेन द पेज इज लोड्स. ओके, पेज लोड होगा तब वैल्यू सिलेक्टेड करके आएगी. देन लेबल, a label, an alternative way of the labeling options. The next one is a file upload box. So we can create using the input type file. Okay, input type file. Here name is equal to file upload and accept image. Okay, यहाँ पे हमने लिख दिया image, तो only image ही upload हो पाएगी. यहाँ पे */* लिखूंगा तो कोई भी फाइल होगी वो हम अपलोड कर पाएंगे. ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है फाइल अपलोड बॉक्स के लिए. ओके, तो दिस इज द आउटपुट ऑफ द फाइल अपलोड बॉक्स. Now hidden controls.
हिडन कंट्रोल्स हम कहाँ पे यूज करेंगे? सपोज कोई वैल्यू है, हमें बैकएंड में ले जानी है, बैकएंड से फैच करवानी है, ले जानी है, ठीक है, तो देन वी कैन यूज अ हिडन टाइप। ओके, तो हिडन टाइप में क्या आएगा? हिडन। ओके, तो दिस द एग्जांपल। यहाँ पे हमने नेम में सिंगल इनपुट कंट्रोल लिया है, उसके बाद एजुकेशन स्टेटस में मैंने ड्रॉप डाउन लिया है। ओके, सिलेक्ट, देन ऑप्शंस। ओके, यहाँ पे हमने 4 ऑप्शंस दिए हैं, बिलो 10th 12th एंड ग्रेजुएट। ओके, नाउ द लास्ट वन, द रीसेट एंड द सबमिट बटन्स। ओके, हम रीसेट की यूज करेंगे। सपोज कोई हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो जितना भी फॉर्म फिलअप किया है उसको रीसेट करना है, देन वी कैन क्रिएट यूजिंग द इनपुट टाइप रीसेट। Okay, for the submitting the forms we can create a submit button using the type is equal to submit. ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इनपुट टाइप रीसेट और इनपुट टाइप सबमिट। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके, कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू मुझे क्वेरी आप भेज सकते हैं। थैंक यू।